Hello my dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome back to Edcore classes. Students, today we will learn how to write F. F for fish, F for family, F for frog. Okay, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि F कैसे बनाते हैं, उसके स्टॉक्स क्या होते हैं और उसको कैसे स्टार्ट करना है और कहाँ उसकी एंडिंग करनी है. For this you have to watch this video carefully. Okay, let us start. F. F for fish. F for fish. F for fairy. F for family. Okay. F for fish. F for fairy. F for family. Trace and write the small letter F. Okay. Let us start. We have to start from here. Keep the pencil here and go up and round, then move, then come down, then move, then again go, and then do like that. Okay, what is this? F for fish, F for fairy, F for family. Again write this, go up, move, go down, then move, then go like this. Again you have to write as well as I am teaching you. जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपको वैसे ही सुंदर और प्यारी प्यारी राइटिंग में लिखना है. ओके, लेट अस राइट अगेन. F for fish, F for fairy, F for frog भी होता है. आपको पता है फ्रॉग क्या होता है? मेंढक. So many words. F for fish, F for frog. Write neat and clean properly. आपका डॉट से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए. कंसंट्रेट करना है आपने कि आपकी पेंसिल जो है वो डॉट के ऊपर ही प्रॉपर तरीके से चले, ना कि इधर उधर जाए. अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो सुंदर नहीं लगेगा ना. पर आप तो सुंदर सुंदर बनाएंगे. आई नो. वेरी गुड. इस तरह से आपने बनाना है. F for fish. Always speak and write. F for frog. F for fish. Okay, done. 2 line as a homework, 1 line as a 2 line as a classwork, 1 line as a homework. Number 1, tick the pictures that begin with the letter F. Look at these pictures. जो पिक्चर F लेटर से स्टार्ट होती है उस पर आपने क्या करना है? You have to mark tick. What is this? Frog. So we will F for frog. So we will tick here. What is this? This is a butterfly. ये B से start होती है, so we will not tick here. What is this? 4. ये F से start हो रहा है, so we will tick here. What is this? F for flag. ये F से start हो रहा है, so we will tick here. Now look at this picture. This is a picture of flower. Flower is also start with F, so we will tick here. This is a car. ये F से start नहीं हो रहा, so we will not tick here. What is this? This is a drum. It is also not start with F, so we will not tick here.
Aeroplane. This is not start with F, so we'll not tick here. Okay, done. Circle the odd one out. इनमें आपको ये चेक करना है जो सबसे अलग आपको दिख रहा है उसको, वो ऑड होता है, अलग मतलब ऑड है, इन सबसे डिफरेंट है, तो आपको उसमें सर्कल लगाना है. यू हैव टू ड्रॉ देयर सर्कल. These are pencils, but this is not, so this is odd one that we will circle here. Okay, now look at this picture. This is a leaf, this is also, this is also, this is also, but this is not, this is flower, so we will circle here because this is odd one. ये odd है, अलग है इनसे, ये सब एक जैसे हैं बट ये इनसे मैच नहीं कर रहा, so that's why ये odd है, so we will circle here. Done. समझ गए आप, आपको कैसे बनाना है? वैसे ही जहाँ से मैम स्टार्ट कर रही है वैसे ही आपको स्टार्ट करना है. ये वीडियो ध्यान से देखनी है, वॉच दिस वीडियो केयरफुली, और वैसे ही आपने बनाकर अपने पेरेंट्स को और अपने मैम को दिखाना है सुंदर राइटिंग में. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. बाय.